Hello student of class 11th. Once again we are here with a new video, and this video I'm covering a topic derivative differentiation. It is a part of calculus, or we can say it is a calculus maths. We have to learn a few things for this in physics because we are going to use some rules of this differentiation in the physics also. The chapter we had started motion straight line. In this, the equation of motion you will learn with the help of the calculus also. So before starting that, I just want to know you what is derivative and how can you use in your topic. So this is a very small video I am making for this differentiation, and those who are taken the maths, those who are of the maths stream, they will learn this in a whole chapter of differentiation, or we can say calculus maths is also the part of the class 12 maths. So they will learn in their chapter, but what the physics is used, how much we have to use, I am going to tell you in this video. So what is derivative? The instantaneous rate of change of one variable with respect to an another variable is called derivative of the function, and geometrically the derivative is the slope of the curve at the point on the curve, and the process of finding the derivative is called differentiation. How can we find the derivative of a given function? We will understand in this video with one or two example I will show you. And who is behind this derivative differentiation? Everyone has heard about the name Newton. So the modern differentiation and derivatives are usually credited to Isaac Newton and Gottfried Leibniz. They developed a fundamental theorem of calculus in the 17th century. This related differentiation and integration in ways which revolutionized the method for computing area and volume. This is the name of the mathematician, or we can say scientist, or we can say physicist, because Newton had a very important role in physics also. So this is the credit go to Newton of this calculus maths, and they help the calculus help so many hidden thing to find. How can we calculate the any of the instantaneous change with the help of calculus? You will see in the physics in the later. What are the real life application of derivative? In automobiles, in an automobile there is always an odometer. Odometer is the device which tells us how much distance we had covered by automobile, and a speedometer tells the speed at which we are running our vehicle. These allow the driver to determine his speed and distance that he has traveled. Means odometer is the device to find the distance, and speedometer is the device to find the speed. So electronic version of these gauges simply use derivatives to transform the data sent to the electronic motherboard from the dial to miles per hour and kilometer. What are the application of derivative in various fields of science? There are so many applications in physics and maths also. Derivative in physics. In physics, the derivatives of the displacement of a moving body with respect to time is the velocity of the body. As displacement of rate of change of displacement is called velocity. So if the displacement of a moving body with respect to time is taken in the form of derivative, so it is the velocity, and derivative of velocity with respect to time is acceleration. Means velocity upon time, we can say that acceleration. So derivative of velocity with respect to time is also called acceleration. Newton's second law, rate of change of momentum is proportional to force. So Newton's second law of motion states that derivative of momentum of a body equal to the force applied to the body. Means dp by dt is equal to force. Means rate of change of momentum is equal to force. This is the Newton's second law. What are the rules for differentiation? As you learn algebra, as you learn arithmetic, there are so many rules to find. In the trigonometry also you had learned so many rules.
So this is also a mass. So what are the rules for differentiation? If you know the rules, then you can differentiate the given function. So what are the rules? Let us see what are the rules here. The rule number 1, if there is a constant value, so the derivative of constant function is 0. If f has a constant value, then d by dx of that constant is 0. Means suppose that example is y is equal to 3. If y is equal to 3 and 3 is a constant value, so the differentiation or derivative of this is 0. Means किसी भी constant term का differentiation 0 रहता है. This is rule number 1. Now we are coming on the rule number 2. The power rule in calculus is fairly simple rule that helps you find the derivative of the variable raised to the power. Suppose that here x to the power 5, 2x to the power 8, 3x to the power minus 3 और 5x to the power 1 by 2 ऐसे अगर वैल्यूज़ दिए हुए हों तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं. तो सिंपली द रूल इज़ डी बाई डी एक्स टू द पावर n अगर दिया हुआ है तो हमारा जो ये वैल्यू होगा वो कैसे इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे. जो पावर होगी उसको हम आगे ले आएंगे. मीन्स n इज़ कम फॉरवर्ड. इफ़ यू सी हियर n इज़ कम फॉरवर्ड एंड n माइनस 1 पावर में से एक माइनस कर देंगे. तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन वेरिएबल विच हैज़ सम पावर. सपोज x टू द पावर 5 इज़ हियर. तो 5x की पावर 5 मतलब 5 पावर में है तो 5 को हम आगे ले आएंगे और 5 में से हम एक को माइनस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन का 5x टू द पावर 4. लेट अस सी एन एग्जांपल. सपोज अ फंक्शन x इज इक्वल टू x टू द पावर 4. सो इफ़ यू कंपेयर इट x टू द पावर n की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है. तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. 4 आगे आ जाएगा और 4 में से एक माइनस हो जाएगा. तो हमारे पास क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 4x टू द पावर 3. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखें. 2x टू द पावर अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 विल कम फॉरवर्ड एंड 8 टू द 16. तो ये जाएगा 16x टू द पावर 8 माइनस 1 मीन 7. तो 16x टू द पावर 7 इसका डिफरेंशिएशन होगा. सो किसी भी पावर के वैल्यूज अगर का हमको डिफरेंशिएशन करना है तो वी विल अप्लाई दिस रूल. दिस इज रूल नंबर 2. Now rule number 3, it is called product rule. The product rule is a formal rule for differentiating problem where one function is multiplied by other. The rule follows from the limit definition of derivative and is given by, suppose that if u and v are differentiable at x, then so is their product uv. Now if you see d by dx uv, u dot v का मतलब u और v मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि u हमारा पहले आ जाता है. तो ये हो जाएगा हमारा u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स. मीन्स एक बार हम इसको u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार इसको v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. मीन्स हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, अगर कोई ऐसे वैल्यूज़ दी हुई हो आपको जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम u को आगे लाएंगे u एंड dv बाई डी एक्स, फिर एक प्लस करेंगे, फिर v को करेंगे v du बाई डी एक्स. इस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. एंड दिस इज द रूल नंबर 3, दिस कॉल्ड प्रोडक्ट रूल. नाउ रूल नंबर 4, दिस इज कॉल्ड कोशेंट रूल. अगर हमारा कोई वैल्यू कोशेंट के फॉर्म में मीन्स अपॉन के फॉर्म में दिया हुआ है, u अपॉन v के फॉर्म में दिया हुआ है, तो d बाई डी एक्स u बाई v को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखेंगे v du by dx minus u dv by dx upon v square. This is the rule number 4 called quotient rule. This a special rule to find the derivative of one function divided by another, and this is called quotient rule. Now rule number 5, it is chain rule. The chain rule is the formula for computing the derivative of composition of two or more functions. Suppose dy by dx को हम लिख सकते हैं dy by du डॉट du by dx. मीन्स dy by dx को हम dy by du डॉट du by dx. ये चेन रूल है. आपको इसमें क्रॉस हो रहा है और इसमें अगर देखें dy by du डॉट du by dx में du से du कैंसिल होने के बाद dy by dx ही बचेगा. दिस इज द रूल नंबर 5 कॉल्ड चेन रूल. After this we will
understand with some example how can we find the derivative of the given quantities. So let us see the example. Now let us see one example. The derivative is of the derivative d by dx, and we are going to find the sum or difference. So d by dx 5 plus x or 5 minus x. So you can write it d by dx into 5 and plus or minus d by dx into x. If there is any constant value, so differentiation of that will be 0, means d by dx into 7, d by dx of 7 is 0. किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 0 होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है. तो यहाँ पर d by dx of 7 is 0 and for the single x is 1, d by dx of x is 1. If a constant is multiplied, suppose d by dx 3x square, so you can take 3 forward and d by dx square. So how the power of that variable is differentiate, it is discussed earlier. अब यहाँ पे x to the power 2 है, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम करेंगे 2x to the power 1. तो अब ये हो जाएगा हमारा 3d by dx x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, तो हो जाएगा हमारे पास 2 3 6, 6x हो जाएगा. इफ़ इट इज़ नेचुरल एक्सपोनेंशियल, तो d by dx ऑफ e to the power x को लिखेंगे e to the power x, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन e to the power x होगा. These are the some rules application with example. Next, suppose fx is equal to 3 e to the power x minus 4x लिखा हुआ है and we have to differentiate. तो हम क्या करेंगे, d by dx 3 e to the power x minus 4x, मीन्स इस पूरे को हम एक साथ लिखेंगे यहाँ पर. इसका जिसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसके आगे हम d by dx लिखते हैं. तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, fx कितना था 3 e to the power x minus 4x, तो d by dx इंटू x, मीन्स x की हमने क्या लिखा है 3 e की पावर x माइनस 4x. अब 3 हमारा पहले आ जाएगा, तो 3 d अपॉन डी एक्स ई की पावर x माइनस 4 हमारा पहले आ जाएगा, तो 4 d by dx इंटू x. नाउ व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एक्सपोनेंट, अभी हमने पहले देखा था. तो ये हो जाएगा e की पावर x, तो उसको लिखेंगे 3 e की पावर x, और x का डिफ्रेंशिएशन x से रिस्पेक्ट क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 3 e की पावर x माइनस 4. दिस इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस 3 e पावर x माइनस 4x. नाउ सी दिस इज़ द कांस्टेंट वैल्यू 5√2, तो द कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है. तो यहाँ पे सीधे हम लिखा है f डैश x इक्वल टू 0. 3 प्लस एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स 3 प्लस एक्स. नाउ d बाई डी एक्स इंटू 3 एंड d बाई डी एक्स इंटू एक्स. तो d बाई डी एक्स 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंस 0, तो यहाँ 0 लिख दिया, एंड d बाई एक्स इंटू एक्स को करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका पूरा डिफरेंस हमारा होगा f x इज इक्वल टू 1. तो दिस इज़ द सम एग्जाम्पल आई डिस्कस टू अप्लाई द रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन. नाउ यू हैव टू learn this, understand the rule of the differentiation, how can you apply and in your physics book, and if you have any reference book, in the beginning of the chapter you see there is a mathematical tools also. You revise from that, learn the differentiation formula, make practice of that, and in the next video we are going to learn how to derive the motion of equation with the help of calculus.